डू यू नो आवर हार्ट रेस्ट मोर देन इट वर्क्स? क्या आप जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो रेस्ट ज्यादा करता है सिवाय काम करने के? एज वी नो वेरी वेल, आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 atria and 2 ventricle. Atria contract for 0.1 second and atria relax for 0.7 second. Ventricle contract for 0.3 second and ventricle relax for 0.5 second. Hello friends, today we are going to discuss about the cardiac cycle. The cardiac cycle is the part of cardiovascular system. The cardiovascular system is the transport system. It transports nutrition, WBC, antibodies to our tissues. जैसे कि हम जानते हैं कार्डियक साइकिल जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन, WBC और एंटीबॉडीज को हमारे टिश्यू में। First of all, we will talk about the overview. Definition, periods of heartbeat, duration and events of cardiac cycle, division of cardiac cycle, significance, and at last pathophysiology. We will talk about the definition. The cardiac cycle is the sequence or the repetition of the coordinated events. Or in other words, the cardiac cycle is the performance of the human heart from the beginning of the one heartbeat to the beginning of the next. कार्डियक साइकिल क्या है? एक सीक्वेंस और रिपीटेशन है कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स का जो हमारे हार्ट में होते हैं एक साथ इन द सेम वे। पीरियड्स ऑफ हार्टबीट, ईच हार्टबीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स, सिस्टोल एंड डायस्टोल. ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज पम्प्ड आउट एंड ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट. जो हमारी हार्टबीट होती है वो 2 मेजर पीरियड से बनी है, सिस्टोल और डायस्टोल. सिस्टोल मींस जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायस्टोल मींस जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है. All these changes are repeated during every heartbeat in a cyclic manner. Duration and events of cardiac cycle. The arterial events and the ventricular events. The arterial events is also further subdivided into 2 major periods, that is arterial systole and arterial diastole. In the same way, ventricular events also consist of 2 major periods, the ventricle systole and ventricular diastole. Division of cardiac cycle. Cardiac cycle consists of following phase: the arterial contraction, isovolumetric contraction, rapid ejection phase, slow ventricular ejection phase, protodiastole, isovolumetric relaxation, rapid ventricular filling phase, slow filling phase. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन की. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन विच देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया एंड 80% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग इज ऑलरेडी डन. जो हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारा फर्स्ट फेज होता है कार्डियक साइकिल का, जिसमें कि जो आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो 80% जो उसमें ब्लड है वो ऑलरेडी फिल रहता है पैसिवली. Arterial contraction contributes only last 20% of the ventricular filling, जिसको हम active filling भी कहते हैं. Atrioventricular and mitral valve are open. इसमें क्या होता है, जो हमारे valve हैं atrioventricular valve और mitral valve वो open होते हैं. Aortic and pulmonary valve वो close रहते हैं. A wave is produced indicating increase in pressure atria due to contraction. Second phase of cardiac cycle is isovolumetric contraction. जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक मींस हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मींस द साइज एंड द शेप ऑफ द हार्ट मसल इज सेम बट द प्रेशर इंक्रीज इन द वेंट्रिकल एंड वॉल्यूम रिमेन सेम. वेंट्रिकल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेशर रीच्ड अप टू 80 mm of Hg. Mitral and atrioventricular valve are closes which produce first heart sound, that is S1 or the love sound. जैसे कि हम दरवाजा होता है हमारा, वो जब भी हम बंद करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है और जब खोलते हैं तो साउंड नहीं आती. इसी तरीके से जो वाल्व होते हैं हमारे मिट्रल और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये जब क्लोज होते हैं तो तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज S1 साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड. एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व रिमेन क्लोज्ड. जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व हैं वो क्लोज रहते हैं. C wave is produced back pressure in atria. V wave due to accumulation of blood coming from lungs to atria. The third phase of the cardiac cycle is the rapid ejection phase. In this, blood fastly goes to the pulmonary trunk and aorta.
Aortic and pulmonary valves open and blood rapidly pumped into aorta or pulmonary valve. Pressure and contraction still continues. Atria acts as a reservoir and gathering the blood from lungs, and right atria collect deoxygenated blood from superior and inferior vena cava, and left atria receive oxygenated blood from पल्मरी वेन. रैपिड इजेक्शन फेज में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो बहुत फास्टली पल्मरी ट्रंक और एओर्टा में जाता है साइमल्टेनियसली, इधर राइट में और उधर लेफ्ट में. एओर्टिक जो पल्मरी वाल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रैपिडली पंप्ड होता है हमारे एओर्टा में और पल्मरी ट्रंक में. स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज. In this, the atria filling continues and pressure start falling in ventricle. इस फेज में क्या होता है, एट्रिया जो फिलिंग होती है वो तो हमारी कंटिन्यू रहती है और जो एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक स्टिल रिसीविंग ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल. प्रोटोडायस्टोल. This is the first stage of relaxation. Isovolumetric relaxation. Isovolumetric relaxation after the ejection phase, all valves are closed and the volume of blood left in ventricle is known as end systolic volume, that is 70 to 80 ml of blood is left. जो हमारा इजेक्शन के बाद है, जो हमारे वॉल्स होते हैं वो क्लोज्ड ही रहते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है. एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड लेफ्ट इन वेंट्रिकल इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. S2 and second heart sound is produced due to closure of aortic and pulmonary valve. यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो S2 और सेकेंड हर्ट साउंड है डब की वो हमें सुनाई देती है, वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पे जो एओर्टिक और जो पल्मोनरी वॉल्व हैं वो हमारे बंद होते हैं. इन दिस फेज बोथ एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड पल्मोनरी वॉल्व आर क्लोज्ड एंड वेंट्रिकल स्टार्ट टू रिलैक्स व्हिच लीड्स टू fall in pressure of ventricles. Rapid filling phase. Pressure becomes less than the pressure in atria and mitral or atrioventricular valve are open. Rapid filling phase means यहाँ पे जो हमारा atria है वो pressure जो है वो क्या हो जाता है, less हो जाता है than the pressure in atria and mitral और atrioventricular valve है वो open हो जाते हैं. Passive filling of ventricle occur without atrial contraction up to 80% ventricle fill, जिसको हम passive filling भी कह सकते हैं. Aortic and pulmonary valve still closed. यहाँ पे जो हमारे aortic और pulmonary valve है वो अभी भी close ही रहेंगे. Sometimes S3 sound is produced during exercise. Slow filling phase. In this phase, ventricle directly receive blood. इस phase में जो ventricle है वो directly receive करता है blood एट्रिया से. एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व स्टिल क्लोज्ड एंड मिट्रल और एवी वॉल्व ओपन. यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब जो मिट्रल और एवी वॉल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारे जो वेंट्रिकल हैं वो फिल होंगे. इन हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट समटाइम्स प्रोड्यूस अ साउंड S4 या फिर फोर्थ हर्ट साउंड भी कहते हैं, जो कि हमारी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है. Now we will talk about the significance of cardiac cycle, means what is the importance of cardiac cycle. Cardiac cycle helps in determining rate and rhythm of the heart, determination of heart sound, for determining duration and timing of murmur sound. At last, we will talk about the pathophysiology of cardiac cycle. In some conditions, cardiac cycle is altered, like in a cardiac failure, myocardial infarction, arrhythmia, valve incompetency and vascular disease. Thank you and keep watching our videos. Like, comment and share and subscribe our channel.